जय जगन्नाथ क्लास मिर्से ओडिया। सो आमे देखी थिले लास्ट टाइम थर्मोडायनामिक्स। ठीक अच्छे थर्मोडायनामिक्स लास्ट टाइम देखते एबे आमे देखिबा नेक्स्ट पार्ट्स थर्मोडायनामिक्स रो द सिस्टम एंड सराउंडिंग हम पढ़ते टाइप्स ऑफ सिस्टम देखते ओपन क्लोज एंड आइसोलेटेड फर्दर आमर ये भाया थिला ओपन क्लोज आइसोलेटेड ओके तापर आसला आमर नेक्स्ट पार्ट इज नेक्स्ट आमर माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक माने लार्जर थिंग माइक्रोस्कोपिक माने स्मॉलर थिंग स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन स्टेट ऊपर जोड़ा फाइनल और इनिशियल ऊपर डिपेंड करछि दैट इज स्टेट फंक्शन पाथ ऊपर जोड़ा डिपेंड करछि पाथ फंक्शन तापर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट माने जोड़ा तुम्हारा अदर ऊपर डिपेंड करूछि डिपेंडेंट वेरिएबल जोड़ा ऊपर डिपेंड करेनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंटेंसिव एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऊपर जोड़ा इंडिपेंडेंट डिपेंड करेनी इंटेंसिव जोड़ा डिपेंड करे एक्सटेंसिव कांस्टेंट टेम्परेचर है आइसोथर्मल कांस्टेंट प्रेशर आइसोबारिक कांस्टेंट वॉल्यूम आइसोकोरिक कांस्टेंट हीट एडियाबेटिक फर्दर तुम साइक्लिक जो तुम इनिशियल और फाइनल स्टेट गोटे साइक्लिक रिवर्सिबल जो इक्विलिब्रियम एराइज हो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल इक्विलिब्रियम एराइज न इरिवर्सिबल इंटरनल एनर्जी होची द एनर्जी स्टोर्ड इन ए सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ एनी केमिकल चेंज इज नोन एज इंटरनल एनर्जी फर्दर हमें देखते इट इज द समेशन ऑफ ऑल दिस different energies and as it is a state function so del is equal to u2 minus u1 and for exothermic reaction it is negative endothermic reaction it is positive for cyclic process it is negative enthalpy of is the amount of heat given or removed from a system is known as enthalpy it is the expression h is equal to u plus pp u is the internal energy and p is the pressure v is the volume. So change in it is as it is also a state function so it can be calculated by the change system. So del S is equal to del U plus PdV. For exothermic reaction it is negative, endothermic it is positive, cyclic it is 0 and for isochoric it is del U. Important. For isochoric process del S is equal to del U. Then for a reaction it can be calculated as del Sp minus del Hr. Now for a ideal gas equation we can have the equation that is del S is equal to del U plus del N RT. Next there is a question. Wait, it's getting too late. So del S is equal to del U plus del N RT, right? This is the expression which can be used to calculate the del H of a reaction.
Wait for a while. My system is getting very slow. From yesterday it is getting very slow. That's why I'm unable to do in a good manner. Due to some problem it is showing. Wait, please wait. You all are waiting still. It's not getting good, I think. For 10 minutes you all are getting bored. I'm also trying to do my best, but due to some technical issue it is not happening. So let's have a question from NCERT. The question is, if water vapor is assumed to be is a perfect gas, molar enthalpy change for vaporization of molar enthalpy change for vaporization of 1 mole of water at 1 bar and 100 degrees Celsius is 41 kilojoule mole inverse.
calculate the internal energy. Calculate the internal energy. केते बड़ क्वेश्चन रे देखो, बहुत easy solution. Calculate the internal energy of 1 mole of water. Internal energy when 1 mole of water is vaporized at 1 bar pressure and 100 degree Celsius. कौन क्वेश्चन रही देख, वाटर वेपरटा कौन है, एज्यूम टू बी परफेक्ट गैस, मोलार एंथैल्पी चेंज फॉर वेपराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 1 बार एतिक इज 41 किलो जूल मोल इनवर्स. सो ये तुम गिवेन रही कौन, गिवेन रही डेल एच, गिवेन रही कौन डेल एच रही. कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी, डेल यू पचराई व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज वेपराइज्ड एट 1 बार प्रेशर and 100 degree Celsius, at 1 bar pressure at 100 degree Celsius. So आम ये क्वेश्चन देखा आंसर केमती सॉल्व करवा. आंसर गिवन कौन रही, गिवन कौन रही, जो मैंने गिवन कौन रही किए कहीपर, गिवन कौन कौन डाटा रही, व्हाट आर द डाटा गिवन हियर, ये कौन कौन डाटा गिवन रही. moles of water, temperature, enthalpy change. Very good. So it is given रही तुम्हारा moles of water, number of moles n केते रही 1 mole, 1 mole of water gas रही 1 mole of vapor, water vapor रही ना. आउ कौन रही, टेम्परेचर केते रही, टेम्परेचर enthalpy change. Temperature is 100 degree Celsius, 100 degree Celsius माने केते केल्विन, 373. Very good, it is 373 Kelvin. Okay, it is 373 Kelvin. And what is the value of R? ये R रो value कौन apply करिया देखिबा. del H माने कौन, del H given भी रही, del H कौन 41 kilojoule mole inverse. Change in enthalpy. Right, एति given रही अब हमको पचराई कौन del U केते पचराई give question रे. Internal energy. Internal energy means del U पचराई. And R value in terms of joule केते apply हबो, joule रे कौन हबो R value 0.08 something. No, in terms of joule. In terms of joule. Sir, 8.314 joule Kelvin inverse mole inverse. Okay, so इटा apply हबो. Clear? समस्त को बुझा पड़ला. Is it clear? Yes sir. Okay. यही डाटा रही, बट ये कौन रही ना H2 वाटर वेपर इज एज्यूम टू बी एंड तुम्हारा ये कौन है इंटरनली 1 मोल ऑफ वाटर इज वेपराइज्ड एट 1 बार प्रेशर. ताले ये कौन है ना वाटरटा ये तुम्हारा वेपराइज है. सो वाटर लिक्विड थिला एंड इट वेपराइज्ड इनटू गैस, राइट. गैस है ना. क्लियर, एडा होची रिएक्शन. इज इट क्लियर? यस सर. हां ताहले हम जो देखिबा फार्मूला, अप्लाइंग द फार्मूला del H इज इक्वल टू कौन फार्मूला था, del U प्लस P del V थिला. P del V बदल रे हम कौन लिखुले del N RT, राइट. del N RT लिखुले ना.
del n माने कौन n2 minus n1 थिला राइट n2 minus n1 सो del h हमर केते रही छी देखिबा del h र वैल्यू केते रही छी 41 del u plus del n अच्छा n किंतु रिमेंबर n is the number of moles of gas only n is the number of moles of gas only not number of moles only n is the number of moles of gas ठीक है ओनली गैस पर एटा एप्लीकेबल एटा गैस रे कौन कौन रही छी प्रोडक्ट साइड रे कौन केते मोल रही छी प्रोडक्ट साइड रे हाउ मेनी मोल्स ऑफ गैस आर देयर 1 मोल माइनस ताले एटी del n केते रहबो del n is equal to 1 काहे कि 1 minus 0 रिएक्टेंट साइड रे गैस नाही टोटली सो इट इज 1 del n is equal to 1 1 into r केते r is equal to 8.314 into t होची तुम्हारो 373 so 41 is equal to del u plus how much is it या को सॉल्व करले आसीबो तुम्हारो 3.096 3.096 ताले del u केते आसीबो 41 minus 3.096 41 minus 3.096 केते आसीबो 8.314 एटा किलो जूल हबो हला एटा किलो जूल यूनिट पड़िबो सेंते एटा भी 8.314 इट इज किलो जूल हला दिस इज किलो जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स नहीं नहीं ठीक है 8.314 जूल ही थिला सॉरी जूल ही ठीक थिला एटा भी ठीक थिला जूल ही ठीक थिला एटा जूल ही हबो भूल कर देली किलो जूल नो ताको सॉल्व करले आसीबो एक्चुअली सॉरी एटा मो टिके भूल हैला याको मल्टीप्लाई करले अप्रोक्स 37.9 समथिंग इट इज एटा आसीबो तुमरो केते ना गोटे मिनिट एटा एटा तुमरो जहां भी आसीबो एटा 41,000 रहइबो 41 किलो जूल अछि सो एटा 41 किलो जूल अछि दिस इज 41 किलो जूल अछि रिमेंबर एटा टिके मो माने रही हेतिला मोटो 41 किलो जूल ताले एटा को याकू सॉल्व करले दिस वन इज किलो जूल is equal to del u plus this one केते आसीबो this one becomes as 3096 37.89 something it आसीबो 3096 okay हाँ it becomes as 3096 37 point आंसर टा अच्छा तो आको हमें किलो जूल रे कन्वर्ट करिवा ना बुझियलानी एटा del n rt टा जोडा थिला इन टर्म्स ऑफ जूल थिला तो किलो जूल रे कन्वर्ट कले एटा कोन हो डिवाइडेड बाय 1000 कले किलो जूल हबो बुझा पड़छि yes sir so it is 41 is equal to del u plus it becomes as 3096 divided by 1000 3096 divided by 1000 so it is 3096 divided by 1000 kilojoule प्रणाम दिशा गुड इवनिंग गजेंद्र गुड इवनिंग प्रणाम सत्यवाद एंड पिंकू ताले एटा किलो जूल रे रहला सो del u is equal to 41 minus this is equal to 3.096 फर्दर सॉल्व करले केते आसीबो 499 गले 0 9 37.904 37.904 किलोजूल मोल इनवर्स क्लियर
del u is clear, is it clear? बुझिएला? Yes, sir. सो एटा गला तुम्हारा यस कोटा आ फास्ट किछि कहया को नै Sir, जा repeat कर दियंतु. रिपीट कोठी करबी देखो रिपीट करिवो जदी तुम्हारा डेलेंटा 1 कहीं केला कारण एठी तुम्हारा गैस जदी हम देखिबा गैस जनरली 1 मोल ही अछि 1 मोल अछि सो 1 - 0 माने 1 हैला इनिशियली एटा लिक्विड साइड एटा लिक्विड रही सो यू हैव टू टेक इज 1 - 0 माने 1 ही नबा को पड़ियो डेलेन इज इक्वल टू 1 ठीक अछि आ या को सॉल्व करले जूल रे आसीबो जूल को किलो जूल रे करले बाय 1000 से आंसर अकॉर्डिंगली सॉल्व करियो ओके नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस एटा हमें देखिबा नेक्स्ट हेडिंग देबा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज कौन कौन डिफरेंट टाइप रे एंथैल्पी रही छी ओके पूरा स्लो हो छी कौन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज कौन डिफरेंट टाइप रही छी फर्स्ट हम देखिबा योर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन गोटे रिएक्शन रो स्टैंडर्ड एंथैल्पी standard enthalpy कौन now the standard enthalpy of a reaction is the enthalpy change for a reaction when at standard condition so we can write here that the enthalpy change of a reaction the enthalpy change of a reaction measured at standard conditions measured at standard condition माने कौन टेम्परेचर प्रेशर एगुड़ा के सब स्टैंडर्ड मैनर रहबो स्टैंडर्ड कंडीशंस दैट इज स्टैंडर्ड कंडीशन रे टेम्परेचर केते रहबो टेम्परेचर रहबो 273 केल्विन टेम्परेचर प्रेशर केते रहबो 1 बार प्रेशर बा 1 atm प्रेशर एटा जनरली रहबो सेटा कहजो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन आ से तळे ताको रिप्रेजेंट कोन करा जिवो del h नॉट सो इट इज रिप्रेजेंटेड एज it is represented as del h r not माने एटा होची स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन ओके तापर हम जिबा नेक्स्ट इज योर
enthalpy of phase change বা phase transformation. phase माने के कहि परियो? phase माने कोन? different phase रहिछि. what are they? different phases of water. कोन कोन रहिछि phases of water? Sir, three phases अच्छे. What are Solid, they? liquid and gas. Very good. So there are three phases. These are solid, liquid and gas. So enthalpy of phase transformation रे हम देखिबा solid, liquid and gas तीनटा रहइबो. So हमें कहि परिबा the enthalpy change accompanying the enthalpy change accompanying change of different phases is known as enthalpy of phase transformation. Is known as enthalpy of phase transformation. ये पुणी बहुत सारा रही enthalpy of phase transformation अंडर बहुत सारा रही. या अंडर कौन रही? फास्ट आसुची enthalpy of fusion. enthalpy of fusion. लिखि दो. It is of following three types. Three types रही enthalpy. First one is enthalpy of fusion. एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन माने कौन? फ्यूजन माने कौन हुए? फ्यूजन रे सॉलिड टा लिक्विड रे कन्वर्ट हुए, राइट? सॉलिड टा लिक्विड रे कन्वर्ट हुए. सो हमें लिख परिबा when 1 mole of a solid substance 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 changes into liquid जेतोले सॉलिड टा कोन थ्री कन्वर्ट हो जिवो? लिक्विड रे कन्वर्ट हो जिवो. सारा फुल कोबी कर दूची खाऊ ना देखाऊ ना कदू चाली बुनी नहीं खाऊ. So when 1 mole of a liquid substance changes into 1 mole of a solid substance changes into liquid, जेतोले लिक्विड रे कन्वर्ट हो जिवो. So when 1 mole of a liquid substance changes into 1 mole of a solid substance changes into liquid, then the corresponding enthalpy change
is known as enthalpy of fusion. তাহলে আমি তা কইবা enthalpy of fusion. ঠিক আছে, enthalpy of fusion তাহলে আমি গোটে एग्जांपल देखिबा जे तुमर H2O solid ice थिबो, H2O solid थिबो, further it is converted into H2O liquid. एतबेले जहाँ enthalpy change रहइबो that is known as enthalpy of fusion. This is known as your enthalpy of fusion. ताको हम कहबा enthalpy of fusion. This is equal to your 6 kilojoule mole inverse. यार वैल्यू आछि 6 किलोजूल मोल इनवर्स. इट वाज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. बुझा पड़ला एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन माने तुम्हारा आइस टा तुम्हारा लिक्विड रे कन्वर्ट हो. तापर आसीबो एंथैल्पी ऑफ, नेक्स्ट वन इज सेकंड इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन रे कोन बस लिक्विड टा गैस रे कन्वर्ट हो. So it लिखिबा 1 mole of liquid, when 1 mole of liquid changes to gas at constant temperature. टेम्परेचर कांस्टेंट रहइबो. टेम्परेचर कांस्टेंट रखिया पई तो हीट दबा पड़ियो. माने टेम्परेचर राइज हेले तो हीट अधिक दे देले नॉर्मल मन इच्छा जति देले हे जो, किंतु कांस्टेंट टेम्परेचर माने हीट सेति की टेम्परेचर ही रखिया पड़ियो, मेंटेन करिया पड़ियो. कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर. Then the corresponding enthalpy change, is known as enthalpy of vaporization. ताको हम कहबा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. ताले हम जब देखिबा H2O liquid is converted into H2O gas, and further the corresponding del H naught is equal to del V vaporation is equal to केते आसीबो एठी. This is equal to 40.79 किलोजूल मोल इनवर्स. माने एठी अधिक दबाव पड़ला. आगो केस रे जदि हम देखिबा बहुत कम रे ही जाउतिला, बहुत कम हीट देले ही जाउतिला. एठी बहुत अधिक देव पड़छि, माने वेपरेशन दा वैल्यू दा अधिक. नेक्स्ट हम देखिबा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. सर यस सर ए प्रोसेस टा जो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन दा टिके माने आठारो अधिक टाइम टेक करियो ना. ऑब्वियसली वेपराइजेशन होबा पय टिके टाइम लागियो. ठीक है, माने सेति पे ही माने तारो जो लास्ट को वैल्यू आसला 640 चेंज होचे. एति की हाई हे गेला से साइड 4 थिला एडे से एडी तुम्हारा 40 हे गेला, 41 पाक हे गेला. ठीक है, ओके. नेक्स्ट is your when 1 mole of solid substance
gets directly converted into gas. For example, CO2 is converted into gas. Then the corresponding enthalpy change is termed as enthalpy of sublimation. তাহলে তাকে আমি কইবা enthalpy of sublimation. মানে এটি তোমার কোন হবো না কার্বন ডাইঅক্সাইড তোমার ডাইরেক্ট সলিড রু গ্যাস রে কনভার্ট হইଯିବ. So here this is enthalpy of sublimation. This is equal to 78, it is your 25.2 is point kilojoule mole inverse. And naphthalene ର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ? ଏଇଟା ତୁମର ଟୋଟାଲ କେତେଟା naphthalene ହେଉଛି 6ଟା CHSE naphthalene. Actually this is the structure of naphthalene. 6টা 1 2 3 4 6 4 10টা. This is 1 2 3 4 5 6 7 8. C10H8. This is naphthalene. Naphthalene ର ମାନେ naphthalene ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ. Do you know naphthalene? Yes, sir. Where is it used? Could use हुए? Sir, to prevent the insects by the damage of clothes. Very good. To ମାନେ ତୁମର cloth damage ନ ହେବା ପାଇଁ prevent କରିବା ପାଇଁ use naphthalene. Also to prevent the damage of book also. And this is equal to your 73.0 kilojoule mole inverse. Okay, so these are the enthalpy. एडी हमरो गोटे फर्स्ट थिला हमरो enthalpy of fusion, enthalpy of reaction standard, and this is enthalpy of phase transformation. ता अंडर तीनटा enthalpy थिला. Next third one, we will move to third enthalpy. That is enthalpy of formation বা standard enthalpy of formation. So we will read enthalpy of formation বা enthalpy of formation. Simply this is enthalpy of formation. जोड़ा को लिखा जाए del HF. When one mole of substance, जो हमारा 1 mole substance form होगा, when 1 mole of substance is formed by prepared from the corresponding elements
then the enthalpy change is termed as enthalpy of formation ताको कहजिवो कोन enthalpy of formation ठीक अछि सेटा हम कहबा enthalpy of formation जेतोले तुमर कोन हो ना 1 mole substance form हो फॉर एग्जांपल मोनर कहबी कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हैला और इट गिव राइज टू CO2 then it is known as enthalpy of formation for example एठी H2O रहिछि H2O जदि हम देखबा H2 plus O2 give rise to H2O so it is del HF naught केता हबो del HF naught is equal to or this is equal to minus 285.8 अच्छा एटा एक्सोथर्मिक ना एंडोथर्मिक एटा हाफ O2 होगा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रिपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 and O2 एनीवन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक del H टा पॉजिटिव ना नेगेटिव एनीवन del HF नॉट टा पॉजिटिव ना नेगेटिव negative. Okay, so as it is negative, we can say that del HF naught is equal to this. Then which process? Clear? बुझिएला सर बुझा पड़लानी एटा बुझाला पड़लानी माने CH4 प्रिपेयर हवा पई केते की हीट दरकार बा H2O प्रिपेयर हवा पई केते की हीट दरकार इधर हीट रिलीज हबो नले हीट दिया हबो ठीक अछि ओके सर दिस इज नोन एज योर हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें आउरी डिस्कस करबा आगो क्वेश्चंस डिस्कस करले ए या ऊपर हमर आईडिया आउरी क्लियर हे जिवो राइट how to do solve okay how to solve the questions accordingly next enthalpy of combustion fourth one is enthalpy of combustion enthalpy of combustion रहिछि further then aschi enthalpy of atomization lattice energy by lattice enthalpy enthalpy of solution enthalpy of dilution तापर आसी हमर बस so हमर आउ रहिछि enthalpy of dilution solution 2 तापर आसी तुम्हारा lattice enthalpy 3 bond enthalpy 4 right bond enthalpy 4 enthalpy of atomization 5 then enthalpy of combustion 7 आउ 7 एभले enthalpy अछि हम सर enthalpy of solution और dilution हां solution dilution दिरा डिफरेंस solution माने तुम्हारा solution सेडी ए कराबो नुआरे ए कराबो माने solution तयारी हबो right solution तयारी हबो that is known as enthalpy of solution but enthalpy of dilution माने सेडी तुम्हारा water simply add कराबो माने solvent add कराबो concentration तार डिक्रीज करबो फॉर एग्जांपल हां फॉर एग्जांपल तुम लैब रे करथिबो NaOH बा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन केमदी करबो कॉपर सल्फेट रे वाटर ऐड करिगी बट सही सॉल्यूशन को डाइल्यूट केमदी करबो फर्दर आउरी वाटर ऐड करिगी माने आउरी एक्सेस अमाउंट रो वाटर ऐड करले यू विल गेट कॉरेस्पोंडिंग डाइल्यूट सॉल्यूशन ओके ओके सर सो नेक्स्ट वी विल राइट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गला नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन यार आउरी बहुत सारा लॉ भी रही लाइक एसएस लॉ रही ठीक अच्छे आम आगू को देखा दिस इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन
combustion माने जलिबा राइट enthalpy of combustion बा del H naught C del H del C H naught enthalpy of combustion means joliba right. So when 1 mole of a substance it is also same when 1 mole of a substance undergoes combustion combustion means reaction with oxygen okay reaction with oxygen से तो reaction को करियो कौन कहियो combustion. So when 1 mole of a substance undergoes combustion the enthalpy change Sir, yes the standard enthalpy of formation करे thermochemical equations आउ Hess's law of constant heat these are the summation. processes actually these are the processes which we will discuss later ये सरला पर last to discuss करियो okay sir. So the undergoes combustion the reaction with oxygen the enthalpy change is termed as enthalpy of combustion. देखो हम कहबा enthalpy of combustion okay. example रे जदि हम देखिबा this is example रे जदि देखिबा example रे C4H10 means C4H10 माने कौन butane very good. So here जति कि तुमरो ए कला परे further ऑक्सीजन से तो रिएक्ट कले जहाँ कंपाउंड्स बाहरिबो एंड एठी द हीट रिलीज इज नोन एज योर del CH naught that is heat of combustion is equal to -2658 किलोजूल मोल इनवर्स माने एति की हीट रिलीज हो चिंता कर ब्यूटेन रो केते हाई अमाउंट हीट रिलीज हो ताले अच्छा ब्यूटेन पर नेक्स्ट हमर जो बॉडी भीतर होची ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 रिमेंबर एठी जहा थिबो सेटा 1 मोल थिबो 1 मोल हेले ही सेटा हीट ऑफ कम्बशन 2 मोल हे गेले हबनी हो सेटा माने तुम्हारा C4H10 टा 1 मोल रही कि ताकू बैलेंस करिवो 2 मोल हबा को दबो नाही 2 मोल पे अलगा कोन माने 2 मोल पे into 2 हे जिवो दिस विल बिकम into 2 आमे किछि प्रॉब्लम कले आउ डिके क्लियर हे जिवो ठीक अछि हम आज थ्योरी सब लिखि देबा फर्दर टुमारो जेतोळे हम डिस्कस करिवा हमर आउ डिके कांसेप्ट क्लियर हे जिवो रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स. सर प्लांट रे जो ग्लूकोज टा प्रोड्यूस होची गैस रूप रे होची ना सॉलिड obviously solid granule रूप रे होची not in form of gas solid रे होची solid तो नहीं yes solid तो नहीं हमें कहि परिबा जे liquid form रे बा plant liquid form रे रहे fruits भितरे आसे maximum fruits भितर रहे other substance रे भी रहे maximum किंतु fruits भितर रहे -2802 okay.
उफ सेट आज पे एतिकी ହିଁ ଥିବ କାହିଁକି ନା ଏଟା ହଉନି ଆଉ ବହୁତ ଲିଙ୍ଗରିଂ ହଉଛି ବହୁତ ସ୍ଲୋ ହେଇଗଲାଣି still it is getting very slow आज पे एतिकी ହିଁ डिस्कस Okay, sir. करथिबा okay you have waited for a long time and I could not give you proper service throughout your waiting sorry for this issue again okay I Sir, hope it's okay. We know that the problem is more than our patience. okay thank you for being patient towards the class ठीक अच्छे नेक्स्ट क्लास रे हमें देखिबा other forms like enthalpy of atomization bond dissociation enthalpy then तुम्हारा आछी enthalpy of lattice enthalpy and enthalpy of dilution enthalpy of solution ठीक अच्छे आउ चार पांचटा enthalpy अछि further gives free energy entropy third law first law zero law first law second law भी पढ़ियार अछि नेक्स्ट क्लास रे हम देखिबा हला आउ किछि टर्म्स रिलेटेड टू enthalpy thank you for Okay, sir. attending the class